Chandramouli Maharaj, Shri Gurave Namaha, Namaha Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutaya, Srimati Bhakti Vedanta Swami Namaha. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharya, Namaste Saraswati Vadi Syatya Deve Panchakalpa Rubhishya Sindhi Adhikarana Bhagane Yom Vaishnavidam Jai Shri Krishna Jai Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivastava Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Sri Prabhupada Ki Jai. In the Mahabharata, there is a beautiful story which illustrates, it's not actually a story, it's a historical event, which illustrates a very important part of understanding the importance of Bhakti Yoga. महाभारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है जो भक्ति योग की महत्व को बताता है। महाभारत में एक वृत्तांत आता है जो भक्ति योग के महत्व को बताता है। And right after the battle of Kurukshetra, King Yudhisthira now became the king of the world. You can shut some of these fans off because they make a lot of noise. Can you all hear me? सबको सुनाई दे रहा है? Okay. So right after the battle of Kurukshetra, King Yudhisthira, the older brother of all of the Pandavas, now became the king of the entire world. तो कुरुक्षेत्र जब युद्ध हो गया तो उसके बाद युधिष्ठिर थे, पांडवों में सबसे ज्येष्ठ थे, वो अभी पूरे पृथ्वी के राजा बने। Now he was a benevolent king. He was concerned about the welfare of his citizens. और वो बहुत ही दयालु राजा थे, अपनी प्रजा के हितों की हमेशा चिंता करते थे। He's not like the rulers nowadays who are more or less interested in their own personal aggrandizement. वो आजकल के नेताओं की तरह नहीं थे। They can see you better. आजकल के नेताओं की तरह नहीं थे वो,
जो कि अधिक से अधिक अपने हित के लिए ही चिंतित रहते हैं। And so, in order to give the citizens a chance to express themselves as far as what they wanted, he had what is called an open door policy. तो प्रजा अपने विचारों को व्यक्त कर पाए और राजाओं की अच्छे से सेवा कर पाए, इसके लिए युधिष्ठिर महाराज ने एक पॉलिसी बनाई थी, नॉकिंग डोर पॉलिसी। मतलब कोई भी आके Open ओपन डोर पॉलिसी, मतलब एकदम दरवाजा खुला है, कोई भी आके कुछ भी अपना हाल बता सकता है। Which means anyone, any citizen can come and see the king and express their needs, their desires. इसका मतलब कोई भी नागरिक आ सकता है, किसी भी समय राजा से आके मिल सकता है और अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकता को बता सकता है। And so Bhima became his secretary. तो जो भीम थे, भीम सेक्रेटरी बन गए युधिष्ठिर महाराज के। The powerful warrior Pandava, Bhima became the secretary of Yudhisthira, and he would meet the people when they came to see Yudhisthira. तो भीम जो है बहुत शक्तिशाली योद्धा भी थे, वो सेक्रेटरी बन गए और कोई भी युधिष्ठिर से मिलने आता था तो पहले भीम से मिलना होता था। So one man came. तो एक व्यक्ति आया, He said, "Oh, Bhim, I have to speak to Yudhisthira. बोले भीम जी मुझे युधिष्ठिर महाराज से मिलना है। The most unusual and unexplainable thing has happened, and I need an explanation." एक बहुत ही आश्चर्यजनक और अवर्णनीय घटना हुई है और उसके लिए मुझे युधिष्ठिर महाराज से समझना है कि ये कैसे हुआ। And Bhim said, "I think Yudhisthira is busy now. Why don't you tell me your concern?" तो भीम ने कहा कि मुझे लग रहा है कि युधिष्ठिर महाराज थोड़े बिजी हैं, तो आप मुझे ही बता दीजिए क्या बात हुई। So the man began, he said, "Well, actually, I wanted to make a beautiful garden." तो वो व्यक्ति ने कहा कि वास्तव में अभी एक बहुत ही सुंदर बगीचे में गया And I got the most beautiful flowers, shrubbery, small trees, bushes, so many nice arrangements for this beautiful garden. I worked very hard for a long time. तो मैंने बहुत समय से परिश्रम करके बहुत सारे अलग अलग फूल पौधे वहां उस बगीचे में लगाए, बहुत लंबे समय तक मैंने मेहनत की है। And after some time, I was so happy to see what a beautiful garden it was. और कुछ समय बाद मैं बहुत ही खुश था ये देख के कि अरे कितना सुंदर बगीचा विकसित हो गया है। But then I thought I have to build a wall around the garden to protect it. लेकिन फिर मैंने सोचा कि बगीचे के चारों ओर एक बाउंड्री और बनानी पड़ेगी जिससे बगीचे की रक्षा हो पाए। And so I built this big stone wall around the garden. तो इस सोच के ही मैंने बगीचे के चारों ओर एक बहुत मजबूत दीवार तान दी। Took me a long time. लंबा समय हो गया And now everything was complete. और अब तो सब कुछ पूर्ण हो ही गया। But then the most strangest thing happened. लेकिन उसके बाद एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना हुई। The wall that I built around the garden started to destroy the garden. जो दीवार मैंने जो चार दीवारी बनाई थी बगीचे के चारों ओर, वही बगीचे को नष्ट करने लग गई। I built this wall to protect the garden, but the wall is destroying the garden. मैं दीवार क्यों बनाई थी कि बगीचे की रक्षा हो, लेकिन दीवार ही जो है बगीचे को नष्ट कर रही है। So Bhima, give me an explanation. तो भीम के पास तो कोई इसका उत्तर था नहीं। And Bhima said, "Well, I think you should go see Yudhisthira." और भीम ने कहा मुझे लग रहा है कि आप युधिष्ठिर महाराज के पास ही चले जाइए। So he went in. तो वो व्यक्ति वहां चला गया। After some time, another gentleman came to see Yudhisthira. कुछ देर बाद एक और भद्र व्यक्ति युधिष्ठिर महाराज से मिलने आए। He said, "Bhim, I don't have a problem, but something happened, and I just need an explanation. And I think Yudhisthira can give me the explanation." तो उन्होंने कहा देखिए भीम जी, मुझे कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन एक अद्भुत आश्चर्यजनक घटना हुई है जिसके लिए मुझे थोड़ा भीम युधिष्ठिर महाराज से जानकारी चाहिए, मुझे लग रहा है वही समझा पाएंगे। Well, Bhim said, "He's busy, but right now you can tell me." तो भीम ने कहा अभी तो वो व्यस्त हैं, लेकिन अभी के लिए आप मुझे ही बता दो।
He said, well, I had a big bucket of water. तो उन्होंने कहा देखिए मेरे पास एक बहुत बड़ी बाल्टी थी पानी से भरी हुई। And I decided to take all of the water and put it into smaller cups. और मैंने सोचा कि पानी निकाल निकाल के अपन छोटे बाल्टियों में डाल देंगे। And I emptied the whole bucket and I filled 5 small cups. मैं पानी निकाल के 5 छोटे बर्तनों में सारी बकेट का पानी निकाल के उसको खाली कर दिया। And then I decided to put the water from the cups back into the bucket. फिर मैंने सोचा कि अब जो 5 बर्तन है इनका पानी फिर से बाल्टी में डाल देता हूँ। And when I put all the water back in, the bucket was only half filled. लेकिन जब 5 बर्तनों का पानी उस बाल्टी में डाला तो बाल्टी ही भरी, जबकि उस बाल्टी से ही 5 बर्तनों को भरा था। I started with a big bucket of water. I filled 5 cups. I put it all back. I didn't spill anything. And now I only had a half a bucket. तो शुरुआत की थी मैंने एक बाल्टी से 5 बर्तनों को भरा था, पूरी भरी हुई बाल्टी से। अभी वही 5 बर्तन मैंने जब उस बाल्टी में पानी डाला तो वो बाल्टी आधी ही भरी, पूरा भरना चाहिए था। So what's the explanation? तो इसको कैसे समझें? Beam said, I think you better go see King Yudhisthira. भीम ने कहा कि मुझे लग रहा है आप एक काम कीजिए, युधिष्ठिर महाराज के पास ही चले जाइए। After a while, a third man comes. उसके बाद एक तीसरा व्यक्ति वहां पे आता है। Oh, what I saw is something that never happens. ओ भीम, जो मैं अभी देख के आया हूँ ऐसा कुछ आश्चर्यजनक है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। But it happened. लेकिन हो गया अभी मेरे साथ। I need an explanation. उसके लिए मुझे समझना है। But Bhima said, well, give me a try. भीम ने कहा ठीक है, प्रयास करेंगे, बताइए। Well, it was this big elephant, Asti. देखो एक बहुत बड़ा हाथी था। And he was walking. और हाथी जो है चल रहा था। And he was heading towards this big, big wall. और एक बड़ी दीवार की ओर जाता जा रहा था। And he crashed right through the wall. और वो उस दीवार के पार चला गया। He got almost all the way through the wall, but his little tiny tail got stuck. लगभग पूरा दीवार के पार निकल गया, लेकिन उसकी पूंछ अटक गई। Big elephant, he walks through the wall, crashes it, but his tail, these elephants have a small tail. देखो बड़ा हाथी है और पूरा बड़ा हाथी दीवार के पार निकल गया, लेकिन छोटी सी पूंछ नहीं निकल पाई। He got stuck in the wall. पूंछ फंस गई दीवार में। Give me an explanation. समझाइए इसके बारे में। Well, Beam said, I don't think it was a good day for me. भीम बोले लग रहा है आज का दिन ही अच्छा नहीं। So maybe you should go see King Yudhisthira. तो अच्छा होगा कि आप युधिष्ठिर महाराज के पास जाके उनसे ही बात कर लीजिए। So fourth man comes. फिर चौथा आदमी वहां पे आता है। Oh, Beam, something happened to me and I can't understand it. Can you help me? भीम, कुछ मेरे साथ आज हुआ है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझे समझा पाएंगे? Well, Beam said, all right, well, tell me your story. भीम ने कहा ठीक है, अपनी कहानी तो बताओ मुझे। I just decided to go someplace I'd never been before. मैंने सोचा कि ऐसी जगह जाएं जहां पहले कभी नहीं गया हूँ। And so I just picked a direction. I just start walking in this one direction. I didn't know where I was going. बस मैंने एक दिशा पकड़ी और उस दिशा में चलता चला गया। And I was walking and I was walking and walking for a long time. चलता गया, लंबे समय तक चलता ही गया। Then it started getting dark. फिर धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। Then I looked around and I see I was in the middle of all mountains everywhere. तो फिर मैंने जब ध्यान से देखा तो देखा चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, उनके बीच में मैं। But they weren't ordinary mountains, they were stone mountains. तो कोई साधारण पर्वत नहीं थे। And I looked on the ground and it was all stone. पत्थर की मैंने नीचे देखा, पूरा पत्थर ही पत्थर है। And everything was और अंधेरा, बहुत अंधेरा। shadow here. अलग अलग परछाइयां वातावरण में होने लगी। And everywhere I looked, all I could see was darkness and mountains. जहाँ कहीं नजर जाए अंधेरा और पहाड़ी नजर आए। Like, that's right.
मैं डर गया, I didn't know what to do. पता नहीं क्या करें, I started to run. भागने लगा, I didn't know where I was running, but I was just running. पता नहीं कहाँ भाग रहा हूँ, पर भाग रहा हूँ। As I was running, I looked down on the ground. जैसे ही भाग रहा था, जमीन की ओर नजर पड़ी, And out of all the stones, there was this one little green plant growing up. और इतने पहाड़ों, इतने पत्थरों पत्थरों के बीच में एक जो है कली खिलती हुई दिख रही थी। So I decided to pull the plant. तो एक पौधा आ रहा था, तो मैंने सोचा उस पौधे को And when I pulled it up, all the darkness was gone, all the mountains were gone, the sun was out, and I felt happy. तो जैसे ही पौधे को उखाड़ा, सारा अंधकार दूर हो गया, सारे पत्थर गायब हो गए और सूरज आकाश में आ गया। What's this explanation? और मैं भी खुश हो गया, लेकिन इसको कैसे समझें? He said, I haven't been doing so good today, so better go see Yudhisthira. इन्होंने कहा आज ज्यादा अपना अच्छा नहीं चल रहा है दिन, एक काम कर, चंद्र महाराज के पास चले जाओ। So after a while, Bhima walks into the room where Yudhisthira is. तो कुछ समय बाद भीम जो है युधिष्ठिर महाराज के कमरे में जाते हैं जहाँ वो बैठे हुए हैं। And Yudhisthira is all alone, nobody's there. युधिष्ठिर महाराज अकेले थे, वहां कोई नहीं। Bhima said to him, did you see those 4 men? भीम ने कहा वो 4 लोग आए थे क्या आपके पास भी? What 4 men? कौन से 4 लोग? Oh, those 4 men. ओ वही 4 क्या? Krishna has just left the planet and Kali Yuga is coming in. These 4 represent Kali Yuga. कृष्ण अभी अभी इस संसार से प्रस्थान करके गए हैं, कलयुग अपना स्थान बनाता जा रहा है और ये चारों लोग जो आए थे ये कलयुग के प्रतिनिधि ही थे। Can you explain their stories? Bhima asked. तो भीम ने कहा उनकी जो कहानियां थी उनका अर्थ समझाएंगे क्या आप? The man with the garden. तो जो पहला व्यक्ति था, The wall that encroached upon the garden, the first man. जो पहला व्यक्ति था, जो ये बता रहा था कि जो दीवार है वही बगीचे को खाती जा रही थी। And Yudhisthira said, this is very sad. युधिष्ठिर महाराज ने सुन के कहा कि ये तो बहुत दुख की बात है। The citizens of a country will elect the government to protect them, but the government will destroy the citizens. इसका अर्थ यह है कि नागरिक जो है, जनता जो है सरकार को चुनेगी कि सरकार हमारी रक्षा करेगी चारों ओर से, लेकिन सरकार ये उनका पोषण नहीं करेगी, उनका शोषण करेगी। Kali Yuga. ये है कलयुग। You elect leaders to protect you, and they take all your money and throw you in jail. नेता को हम चुनते हैं कि हमारी रक्षा करने के लिए, नेता हमारा पैसा चुरा के हमको ही जेल में डाल देते। Kali Yuga. ये है कलयुग। The man with the buckets and the cups. दूसरा जो व्यक्ति था जिसके पास बाल्टी और बर्तन की कहानी बता रहा था, Yudhisthira said, oh, this is very sad. युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये भी बड़े दुख की बात है। Mothers, fathers, well-wishers, spiritual leaders will give so much to their children, to their disciples, but the children will not appreciate their parents. यहाँ बता रहे हैं कि वो जो बाल्टी और बर्तन का उदाहरण था कि माता पिता या गुरु या शुभ चिंतक अपने बच्चों को बहुत कुछ देंगे, लेकिन वो बच्चे मिलके भी उनका पालन नहीं कर पाएंगे, उनको धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। You start with a full bucket, you only get half. 4 बर्तनों से शुरू किया, 4 बर्तन भरे, लेकिन उससे वापस बाल्टी भरी तो आधी ही भरी। Feature of Kali Yuga, the children in this age will not really honor and respect their parents. तो ये कलयुग का विशेष लक्षण है कि इस कलयुग में जो बच्चे हैं माता पिता को समुचित आदर सम्मान प्रदान नहीं कर पाएंगे। The elephant in the wall. तीसरी कहानी है कि हाथी जो है दीवार में से निकल गया, पूंछ रह गई। What does that mean? ये क्या हो रहा है? Yudhisthira explains. युधिष्ठिर महाराज समझाते हैं, If you have money, you commit some crime, you get justice and you get free from your crime. If you have no money, no justice. यदि आपके पास पैसा है तो अपराध कितने भी करो, वो पैसे के द्वारा सब
माफ हो जाएगा, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो छोटी सी गलती होगी उसकी बड़ी सजा मिलेगी। The rich man, he can buy justice, and the poor man, even if he's innocent, he goes to jail because he has no money. तो अमीर आदमी है वो कानून को खरीद लेता है, गरीब आदमी है पैसा नहीं है तो भले ही गलती ना भी हो तो भी उसे दंड मिल जाता है कभी कभी। This is Kali. ये है कलयुग। Big people with a lot of money, they're committing crimes all the time, but because they have money, they buy their way out. कई इस तरह बड़े बड़े लोग हैं जो अपराध कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि पैसा है तो फिर वो जिंदगी तरह जुगाड़ से अपना बाहर घूम रहे हैं। The poor man, even if he's innocent, he can't get any money to protect himself, so he winds up getting punished. गरीब आदमी है पैसा नहीं है भले ही मासूम है लेकिन फिर भी अपराध के कारण दंड भोगना पड़ता है। Kali Yuga. ये है कलयुग। The elephant goes through the wall, the tail represents the poor man. हाथी बड़ा निकल गया लेकिन पूंछ बता दी है गरीब आदमी को, वो गरीब आदमी इतना छोटा अपराध में भी निकल नहीं पाता है। And the last man, the man who went for a walk, came to the mountains, everything was dark. और जो आखिरी व्यक्ति था जो कि गया जब घूमने, घूमते घूमते अंधेरे अंधेरे में और पहाड़ों के बीच में से जा रहा था, What does that mean? तो उसको जो पौधा मिला वो उसका मतलब क्या है? Yudhishthira, he becomes happy. अब युधिष्ठिर महाराज खुश हो गए। He says, this is the benediction in this age of Kali. बोले ये है कलयुग का वरदान। The darkness, the mountains, and all the fearfulness represents all the problems in Kali Yuga. जो अंधेरा है, जो पहाड़ पर्वत हैं, जो पत्थर है, वो सब दर्शाते हैं कि ये सब कलयुग के दोष हैं। But that little green creeper, that's the holy name. ही बोल, लेकिन जो छोटा सा जो पौधा आ रहा है हरा हरा वो है हरिनाम। So by Kaler Doshaniti Rajan Astiyako Mahagun Kirtana Evi Krishnasya Mukta Sangam Param Bhajet. Out of all this age of Kali, it's an ocean of faults, so many problems. तो श्रीमद् भागवत में बताया है कि कलोर कलेर दोष निधे राजन, ये जो कलयुग है ये दोषों का महासागर है, इसमें दोष ही दोष है। But Asti Echo, there is one gun, Asti Echo Mahagun. Not just gun, Mahagun. लेकिन अस्थि एक महान गुण, तो इसमें एक वरदान, वरदान नहीं एक महान वरदान इस कलयुग में है। Kirtana Eva Krishnasya, chanting the holy names of Lord Shri Krishna. कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करने से ही Mukta Sangam Param Vajet, one can purify their existence and go back to the spiritual world. कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करने से ही हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं और भगवत धाम वापस जा सकते हैं। This is the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, who was Krishna himself. ये है चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है। So this age, it's a difficult age. So many problems. तो ये युग जो है बड़ा कठिन युग है, इसमें समस्याएं बहुत हैं। But for devotees, no problem. भक्तों के लिए लेकिन समस्या नहीं है, because they chant Hare Krishna, क्योंकि वो Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे राम 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 हरे। And simply by bringing in Krishna with his holy name, Kali Yuga Pavana Kali Boyanasana Sri Sachinandana Pray Kali Yuga Pavana Kali Boyanasana Sri Sachinandana Kali Yuga Pavana Kali Boyanasana Sri Sachinandana Pray युग पावन दोषनाशन श्री सच्चिदानंद So the Kali Yuga is a dog. Ruff, 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 ruff. Lord Chaitanya comes out with a stick. And the dog he runs away.
soon as you see Lord Chaitanya, no problem. No Kali Yuga. Kali Yuga is gone. Kali Yuga, Kali Bhoyanasana, finished. ये वो तो कलयुग बताया गया है कुत्ते की तरह भौं 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 कर रहा है। उसी समय महाप्रभु आते हैं डंडी लेके और शांत हो जाता है कलयुग। तो इस प्रकार से सारे दुख जब हरिनाम के साथ हो जाएंगे। He's a small dog. Your dog. So if we make the chanting of the holy name of Krishna our number one activity, then everything becomes Vaikuntha. तो यदि हम हरिनाम को अपने जीवन में सबसे पहला कार्य बना लेंगे तो पूरा हमारे लिए पूरा जगत वैकुंठ की तरह हो जाएगा। And it's explained, Satatam Kirtayantoman, chant always, chant anytime. और ऐसा बताया है शास्त्रों में, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा जप कीजिए, हर समय जप कीजिए। You don't have to go to the temple to chant. You can chant anywhere. जरूरत नहीं है मंदिर जाने की भी जप करने के लिए, कहीं भी जप कर सकते हैं। When you feel good, chant. जब आपको लग रहा है आप जप शुरू कीजिए। When you don't feel good, chant. अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी जप कीजिए। Chant while you're working. काम करते हुए जप, Chant while you're eating. खाते हुए जप, Chant when you're fighting with your husband or wife. पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है तो उस समय भी नाम करते रहिए। Then it will be very pleasant argument. तब जो बहस होगी वो भी मधुर होगी। Really, if you bring in the holy name, there's no problem. वास्तव में हरिनाम का प्रभाव है। Chant while you're sleeping. सब सो रहे हैं हरिनाम करते रहिए। Sadhus, they can do that. इस तरह साधु महात्मा हैं जो सोते हुए भी हरिनाम कर पाते हैं। The holy name is, let's say, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Alone, Nasti, Nasti, Nasti. There is this in this age. There's no other way, no other way, no other way. If you want to make a point, principle, you want to establish a principle of philosophy, you say it 3 times. तो इस तरह बताया है ये जो हरिनाम है कलयुग के दोषों को नाश करने की एकमात्र विधि है, एकमात्र विधि है, एकमात्र विधि है। कलयुग में और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो किसी भी सिद्धांत को हम जब स्थापित करना चाहते हैं तो हम उसे 3 बार जोर दे के बताते हैं। It's like sometimes you're telling your children something. जैसे कभी कभी आप बच्चे से बात कर रहे हैं, बच्चों को कुछ बोलना है, You say, do this, तो आप बोलते हैं करो इसको, do this, करो इसको, do this. करो इसको। 3 times. 3 बार हो गया, 3 बार बोला। 3 means nothing else. 3 मतलब जो बोल दिया वही करना है और कुछ नहीं करना। This is Shastra. Shastra says if you want to make a point that is no undoubtable, cannot be movable, emphasize it 3 times. तो शास्त्रों में इस तरह बताते हैं कि ऐसा कोई तथ्य स्थापित करना है जिसमें कोई मिलावट नहीं कर सकते, कोई उसका कोई विकल्प नहीं है, तो उसको 3 बार जोर देके कहा जाए। So the scriptures say, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevala, no other way, no other way, no other way. In this age, because in this age, people are not inclined to all of the austerities that many of the persons performed years ago in order to get God consciousness. तो शास्त्रों में इसलिए जोर देके कहा है कि हरिनाम ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय है और कोई तरीका नहीं है, तरीका नहीं है, तरीका नहीं है। क्योंकि इस कलयुग में लोगों की रुचि भी नहीं है उस तरह की तपस्याएं करने में जो लोग पहले किया करते थे आध्यात्मिक उन्नति के लिए। And this chanting is coming from the spiritual world. It's not part of this world. तो ये जो हरिनाम है ये गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत से आ रहा है, इस जगत का नहीं है। Golokera, Premadana, Harinam, Sankirtan, Ratin Jan, Milokene Upai. That this chanting of the Hare Krishna Maha Mantra descends from the spiritual world into the hearts of the great souls. And they, because of they are merciful,
they take that mercy and they distribute to everyone. That is the mercy of the holy name. तो ये जो हरिनाम है ये गोलोक का प्रेमधन है। गोलोक से ये प्रकट होके शुद्ध भक्तों के हृदय में प्रकाशित होता है। शुद्ध भक्त उसको ग्रहण करते हैं और फिर वो अपनी कृपा के कारण सभी जगह इस हरिनाम को वितरित करते हैं। So we ask devotees chant 16 rounds. तो जनरली भक्तों से कहा जाता है कि 16 माला का जप करें। It takes about 2 hours, maybe a little over 2 hours. That's if you're slow. 2 घंटे या 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा इसमें समय लगता है। But that's really just to help you develop a taste for chanting. Really, it's Satatan Kirtayantum, we should chant always. लेकिन ये 16 माला का जो नियम है ये वास्तव में इसलिए है कि हरिनाम करने के प्रति हमारा एक भाव, एक रुचि हमारी जागृत हो। वास्तविक सिद्धांत तो यह है कि सरतम कीर्तयन्तम, हमेशा हरिनाम करते रहना है। In Bengal, they have a saying. बंगाल में कहावत है, Hate koro kaje, muke bolo hori. हाथे करो काजे, kaje, muke bolo hori. मुखे बोलो हरि, यानी हाथ में काम और मुंह में नाम। Hate koro kaje, muke bolo hori. So whatever you're doing, chant. हाथे करो काजे और मुखे बोलो हरि, तो जो भी काम करते हो हरिनाम करते रहो। And when you chant, you're with Krishna because Krishna's name is Krishna. तो जब आप जप करते हैं तो आप कृष्ण के साथ ही हैं, क्योंकि कृष्ण का नाम और कृष्ण अभिन्न है। It's not a material name. ये कोई भौतिक ध्वनि नहीं है। It cannot be contaminated by anything material. कोई भौतिक नाम नहीं है और किसी भी भौतिक अवस्था से हरिनाम दूषित नहीं होता। It's on the platform of complete liberation. हरिनाम जो है पूर्ण मुक्ति के स्तर पे है। And it's Krishna himself. और ये स्वयं कृष्ण स्वयं है। Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Punya Sudya Nitya Mukta Abhinna Tvam Nami Nami No. Binna means same. Abhinna means different. And Abhinna means not different, same. So Krishna's name is Krishna. ऐसा बताते हैं अभिन्नत्वात् नाम नामेनो। भिन्न मतलब अलग अलग, अभिन्न मतलब एक। तो कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है, मतलब एक ही है। Just like we go to the temple, we see the deity, we say, oh yeah, there is Krishna. जैसे हम कभी विग्रहों के दर्शन करने जाते हैं तो हम वहां दर्शन करते हैं, सोचते हैं ये जो विग्रह है ये कृष्ण ही है। So Krishna comes in his deity form. तो कृष्ण जो है अपने विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। So we worship the deity, we're worshiping Krishna because the deity is Krishna. जब हम विग्रह आराधना कर रहे हैं तो हम कृष्ण की ही आराधना कर रहे हैं, क्योंकि विग्रह और कृष्ण अभिन्न है। Same with the holy name. हरिनाम के साथ भी यही बात है। But this worship is simple. लेकिन ये जो पूजा की पद्धति है हरिनाम की, वो बहुत सरल है। Just chant. बस जपना है, That's all. बस इतना ही करना है। Chant anytime, anywhere, any place. Doesn't matter who you are, what your situation in life is. Chant. कहीं भी, कभी भी, कहाँ पे भी हैं वहां जप कर सकते हैं। जीवन की किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जपिए। Why am I saying this? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? Because everyone wants to be happy. क्योंकि हर कोई वास्तव में क्या चाहता है, जीवन में खुश रहना चाहता है, आनंद चाहता है। And chanting will make you happy. और हरिनाम कीर्तन, हरिनाम जप आपको खुश कर देगा। Because Krishna is, another name for Krishna is Rangakara. That means he's always happy. तो कृष्ण का एक और नाम है रंगकार। इसका मतलब कृष्ण हमेशा खुश रहते हैं। So we want happiness. That is the purpose of life. The purpose of life is to become happy. तो हम सभी खुशी चाहते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद। Everyone's trying for happiness in so many different ways. हर कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है आनंद प्राप्ति का कई तरीकों से। Whether you're poor, rich, in between, everyone wants happiness. गरीब हो, अमीर हो, कोई बीच में हो, मिडिल क्लास में हो, सभी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम खुश रहें। Even the animals, they want happiness. पशु भी क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं। Because the nature of the soul is ananda. क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है आनंद प्राप्त करने का।
It's normal to be happy. तो आनंद में रहना ये आत्मा की स्वाभाविक अवस्था ही है। It's abnormal to be unhappy. जब हम दुखी हैं तो ये अस्वाभाविक अवस्था है। So Lord Chaitanya says, chant and be happy. तो चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा जप कीजिए और हमेशा प्रसन्न रहिए। And when you chant, you connect with Krishna. और जब आप कीर्तन करते हैं जप करते हैं तब कृष्ण से आपका संपर्क जुड़ जाता है। And when you're connecting with Krishna, there is no more connection with the material energy. You're free from suffering. जब इस तरह कृष्ण से संपर्क जुड़ जाएगा तो भौतिक शक्ति से कोई संपर्क नहीं रहेगा और फिर आप कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। Maya davasse kacho bese kacho ha bubuduai Jeev Krishna Das. Hey Vishwas Kolina Adukanai. So quit wasting time with Maya. Just become Krishna Das and Vishwas Kolina Adukanai. Everything becomes wonderful. तो माया के साथ अपना खेल के समय नष्ट करना छोड़ो और कृष्णदास के रूप में भगवान से नाता जोड़ो। Don't be Maya Das. माया दास मत बनिए। There's so many Maya Dases out there. माया दास बहुत घूम रहे हैं And nobody's happy. और कोई खुश नहीं है माया दास बन के। If everyone was happy, then the world would be a nice place. But nobody's happy. That's why everyone is suffering. And because they're suffering, they cause everybody else to suffer. यदि सभी ही आनंद में होते तो ये जगह बहुत अच्छी होती रहने के लिए, लेकिन कोई भी आनंद में नहीं है, लोग कष्ट भोग रहे हैं, तो इसलिए वो खुद कष्ट भोग रहे हैं तो औरों को भी कष्ट देना चाहते हैं। So the process is easy. Hare Krishna. लेकिन हमारी विधि बहुत ही सरल है, बस हरिनाम कीर्तन करना है। जीव जागो घोर चंदम बोले Kota nidra jayo maya pisachira pole jiva jago Ora chandra pole Kota nidra jayo maya pisachira pole Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
हाँ, किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं आप बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं तो आप बता के पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा खाली छोटा सा एक जिज्ञासा है कि जब हम निरंतर 24 घंटे नाम जप करते हैं तो क्या 16 माला गिन के करना आवश्यक है क्या? You count the first 16 and after that we can stop counting. तो महाराज बोल रहे हैं कि पहले 16 तक तो जब 24 घंटे करते हैं तो पहले 16 माला तक गिनती कर लीजिए, उसके बाद फिर गिनती ना करेंगे चल जाए। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है. It's okay? No, make sure you do your 16 because you may not be counting properly. So do 16 rounds and then just keep checking. So तो पहले 16 माला अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद हरि नाम करते रहिए, फिर गिनती की जरूरत नहीं। you think, well, I'll get nothing else done. You'll get everything. Yeah. Sometimes you think, if I chant all day, then what else will I do? You'll do everything else, but you'll chant too. कभी कभी आप सोचते हैं कि अरे पूरा दिन ही तो हरिनाम ही करेंगे और करेंगे क्या, लेकिन बाकी सब हम कर लेते हैं, हरिनाम नहीं करते हैं, इसलिए गिनती करना बहुत ही जरूरी है। Chanting will make whatever you do even more wonderful. Even the ordinary things become extraordinary when we bring in Krishna's name. तो जब हम हरिनाम करते हैं, हरिनाम का प्रभाव ये होता है कि जो भी आप करते हैं वो अद्भुत हो जाता है, भले ही कोई साधारण सा कार्य भी हो वो अद्भुत हो जाएगा, क्योंकि आप कृष्ण को हरिनाम को बीच में लेके आए। Somesh ji. हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर द नेक्टेरियन क्लास। तो मेरा प्रश्न है कि जब हम भक्तों के साथ रहते हैं तब तो हम चार्ज अप रहते हैं डिवोशनल सर्विसेज के लिए, किंतु जब हम अपने डेली रूटीन वर्क्स में जाते हैं तो हमें भौतिक सभी चीजों से डील करना पड़ता है, चाहे बिजनेस हो या नॉन डिवोटीज। तब फिर अगर हम भक्त रहते हैं, उनको अगर इस तरह भी रहता है तो एक तो पहला वो उन्हें लो फील होता है। मतलब आज का जो माहौल है कि जो सब लोग रह रहे हैं वो सो कॉल्ड डिवोटीज, ज्यादातर वह फॉलो हो रही चीजें और डिवोशन एक्टिविटीज अलग लग रही है। तो उस तरह किस तरह उस माहौल में हम चाहे जब रहे और लोनली ना फील करें। भक्तों के साथ तो इजी है। To stay in association of devotees. बस फिर आप भक्तों के संग में ही रहिए।
Prabhupada wanted us to create communities where devotees can live together, work together, associate with each other, and inspire each other, both our material needs and our spiritual activities. प्रभुपाद जी चाहते थे कि ऐसे समुदाय का विकास करें जहाँ भक्त साथ में रह सकें, साथ में कार्य कर सकें, साथ में एक दूसरे को प्रेरणा प्रदान कर सकें, एक दूसरे का संग कर सकें। इस तरह से उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो और आध्यात्मिक जो इच्छा है वो भी पूरी। I've been here for 3 days doing programs. I see so many wonderful devotees, all qualified in so many ways. तो मैं यहाँ 3 दिन से प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मुझे देखने को मिला बहुत सारे योग्य योग्य, बहुत सारे अद्भुत अद्भुत भक्त हैं आप सब। So create a community where you all live together. तो ऐसा एक समुदाय का आप निर्माण कर लीजिए जहाँ आप सभी एक साथ रहें। You can create ways by which you can take care of your material needs and support each other in your spiritual life. तो और इस तरह से तरीके आप निर्मित कर सकते हैं जिससे आप एक दूसरे की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन में एक दूसरे को सहयोग प्रदान कर सकते हैं। Srila Prabhupada didn't want us to work for the non-devotees. He wanted us to have our own communities where we work and live, worship together. श्रील प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि हम अभक्तों के लिए काम करें। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हम अपने समुदाय का निर्माण करें जहाँ पर हम साथ में रहें और साथ में कार्य करें। So he said, build these communities, get some land, grow some vegetables, keep some cows, and develop nice, simple living. You don't have to go to work. You simply take care of your personal needs. That'll be your work. And you can have time, plenty of time to chant and associate with devotees and practice Krishna consciousness. तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि आप जो है अपना ही एक समुदाय का विकास कीजिए, कुछ जमीन खरीदिए, वहां पे खेती कीजिए, कुछ गायों को रखिए जिससे कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी और वहीं से आपका जीविकोपार्जन हो जाएगा और काफी समय आपका बचा रहेगा जिसमें आप कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं और एक दूसरे का संग कर सकते हैं। Our motto is simple living, high thinking. हमारा जो मंत्र है, मूल मंत्र वो है कि सादा जीवन उच्च विचार। Not, what do you call it? No thinking and high living. Simply living without thinking. ऐसा नहीं कि बस जी रहे हैं और कोई विचार ही नहीं है क्यों जी रहे हैं। So we want peace, but if we sell our time and energy to the materialistic society, it becomes very difficult. But you can still practice Krishna consciousness wherever you are. But when you're with community, if you're with devotees, when you have all of you need right where you live, then life is simple. The children get good care. They're with devotees. They have so many mothers. People can share resources. You can share labor. Everything is done in a communal way. तो इस प्रकार से जब हम भक्तों के समुदाय में नहीं रहते हैं तो अपना समय और अपना शक्ति जो है हम दूसरों को भेज देते हैं जिससे कि हमारे पास बहुत ही कम समय बचता है। भक्ति फिर भी कर सकते हैं लेकिन जब भक्तों में रहते हैं तो हमारे खुद का विकास होता है, हमारे बच्चों को भी बहुत सारी माताओं का प्यार मिलता है और इस तरह से हम अपने आपस में दूसरे को पोषण देते हुए एक साथ विकास करते हैं। And then you can build your own temple also. फिर आप अपना एक स्वयं का मंदिर भी यहाँ बना सकते हैं। And everyone lives together and they worship the deity there, right there on your own land where you live. आप सभी जब एक साथ रहते हैं तो बना सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं और खुद की जमीन होगी जहाँ पे खेती वगैरह कर सकते हैं। If you go back about 2,000 years, this is the way people lived. They lived in community and the temple was there in the center of the community and everyone worshiped in that way. यदि आप कुछ समय पीछे जाएं 2000 साल पीछे
तो उस समय इस तरह से समुदाय हुआ करते थे, छोटे छोटे, हर समुदाय का अपना मंदिर होता था, लोग वहीं मंदिर में रहते थे, पूजा करते थे मंदिरों में और खेती कार्य करते थे। This Western lifestyle destroys people's good qualities. ये जो पाश्चात्य सभ्यता है ये मनुष्य के सद्गुणों की है। Going to work and making some money, some piece of paper. You get. How much money you got? I don't know, but I got a lot of paper. काम पे जाओ, मेहनत करो, फिर क्या मिलता है? कागज के टुकड़े मिलते। कितना पैसा मिला और पैसा पता नहीं, लेकिन क्या मिले? कागज के नोट। According to scripture, actual wealth is land. You have land, you have. शास्त्रों के अनुसार वास्तव में जमीन जो है वही धन है, जिसके पास जमीन है वही धनी व्यक्ति है। If you have cows, animals, you have wealth. यदि आपके पास गाय हैं, इस तरह पशु हैं, तो ये भी धनी होने का संकेत। You have precious metals like jewelry, gold, silver, platinum. That's wealth. यदि आपके पास जो है कीमती धातुएं हैं, जैसे कि सोना है, हीरा है, सोना है, तो ये है धन, धनी होने का लक्षण। When you go to work, they give you a piece of paper. There you go. This is your money. The government says it's no good. Mr. Modi says, all right, let's pull back the 2000 note. And then it's no good anymore. तो इस तरह से हम जब बाहर जाएंगे काम करने, क्या देंगे? नोट देंगे। हम बोलेंगे वाह 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 क्या नोट मिल गए। मिस्टर मोदी जी पीछे जाके बोलेंगे 2000 के नोट बंद। I was in India in 2016, beginning of 2017, when Mr. Modi stopped the 1000 note and the 500 note. Yes. And you had to prove that you earned the money, otherwise it was useless. And people were burning money in the streets. So it was like, it's just a piece of paper, it's all it is. The government says it's good, it's good. The government says it's no good, it's no good. That's not real wealth. Real wealth is cows, land, precious metals. That's land, that's wealth. तो महाराज उदाहरण देकर बता रहे हैं कि 2016 के शुरू में जब महाराज भारत में ही थे, तब माननीय मोदी जी ने कहा कि 500 और 1000 के नोट, मित्रों 500 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। नोट बंद हो गए और उसके बाद सिद्ध करना पड़ेगा कि ये पैसा आपने ही कमाया है, तभी जाके वो आपके नोट है, वरना वो कुछ वैल्यू उसकी नहीं है। सरकार जब तक बोलेगी हाँ इन नोटों में दम है, तब तक दम है। सरकार बोलेगी इन नोटों की भी कोई कीमत नहीं है, तो वो कागज पे टुकड़ा। Thank you. Yeah, so this is the way we are meant to live, not the way we're going now with this industry, people working hard, killing themselves to get some money, people are getting drunk, there's so many mental problems, physical problems. This is all due to a wrong life. Live close to the land, worship the Lord, keep cows. Cows are auspicious. Krishna is called Govinda. He gives pleasure to the cows. Krishna is called Gopal. His planet in the spiritual world is called Goloka. Cows are so auspicious. If you have cows, you have cows. Because cows can provide everything you need to live happily. तो महाराज बता रहे हैं कि वास्तविक धन जो है वो है गायें हो हमारे पास, जमीन हो, कीमती धातुएं हो। जैसे पहले जमाने वाले ऐसे ही रहा करते थे, लेकिन आज के जमाने में मेहनत करो, थोड़ा पैसा कमाओ, फिर नशे में उड़ाओ, फिर मानसिक समस्याएं, इस तरह पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। तो वास्तव में सबसे अच्छा है जमीन के पास में रहो और भगवान की सेवा करो और गायों का पालन करो। भगवान का एक नाम है गोविंद, क्योंकि भगवान जो है गायों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। भगवान का एक नाम है गोपाल, क्योंकि भगवान गायों का पालन करते हैं। और भगवान का धाम भी क्या है? गाय के नाम पे। क्या धाम है? बोलो। Cows become part of the family. They become just like the children in the family. तो इस तरह जब गायों की सेवा करेंगे तो गायें आपके परिवार का एक अंगी बन जाएंगी, आपका परिवार बन जाएंगे। I was giving a class in America. I was speaking about cows.
अमेरिका में महाराज कक्षा दे रहे थे और उस समय गायों के बारे में चर्चा चल रही थी। All of the people were Indians. They're all living in America. तो सारे जो जनता सामने भक्त बैठे थे वो सब भारतीय थे, लेकिन अभी अमेरिका में आके बस गए थे। One man, he said, yes, when I used to be in India, we lived in the village and we had our own cow. एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला कि देखिए, जब हम गांव में रहते थे तो हम भी भारत में हमारे भी घर में गाय थी। And he said, if somebody in the family gets sick, then someone goes to the cow and tells the cow that this person in the family is sick. And the cow will go into the field, look for that herb that cures that disease. She will eat it. They milk that cow, give it to that person. And then that person gets cured. Yeah. तो महाराज बता रहे हैं कि उस समय वो बता रहे थे कि हमारे घर बीमार पड़ता तो घर वालों को जाके गाय को बताते थे, गाय घूमते घूमते जाती और गाय देखती ऐसी जड़ी बूटी जो कि बीमारी का इलाज है, जड़ी बूटी को खा के आती, गाय का दूध निकालते, दूध देती, पीता, बीमार होती, ठीक हो जाती गाय का। One other man says, you don't even have to tell a cow. She knows when somebody is sick in the family, and she'll go and eat that herb. तो दूसरे व्यक्ति बोला कि हमारे यहाँ तो बताने की जरूरत भी नहीं है, गाय समझ जाती है कि ये व्यक्ति बीमार है, कौन सी बीमारी के हिसाब से वो अपनी जड़ी बूटी खा के आती है, तो उस दूध से व्यक्ति पीने से उपचार। Without cows, there's no dharma. गायों के बिना धर्म है ही नहीं। Cow represents dharma. गाय जो है वो धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। Lakshmi Devi, the goddess of fortune, she exists within cow dung. लक्ष्मी देवी जो हैं वो गाय के गोबर में उनका निवास है। Cooking. I used to cook. I was a cook when I was in the Brahmachari ashram in the New Vrindavan community in West Virginia. महाराज बता रहे हैं कि जब मैं अमेरिका में वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन के समुदाय में जब मैं था ब्रह्मचर्य आश्रम में, तब मैं खाना बनाया तो करता था। And we cooked with wood. We used only wood. Devotees would go out and get the wood, bring it. We would cook for the deities, we cooked for the devotees. और हम जो है खाना बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते थे, रोज जाके लकड़ी काट के लाते थे और फिर लकड़ी से ही जो है विग्रहों के लिए, भक्तों के लिए भोजन बनाते थे। And Prabhupada was telling us, he said, cow dung, first class. प्रभुपाद जी बता रहे थे गोबर फर्स्ट क्लास। You make the cow dung patty, you dry it out, put it in the fire. It tastes so nice. तो इस प्रकार से गाय का जो है गोबर उसको सुखा के आप उसे जब अग्नि में डालते हैं और उससे खाना बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बनेगा। First class is cow dung, second class is wood, third class is gas, fourth class electricity. Electric stoves. Be careful, ladies, if you're sick and you're cooking on electric stoves, you can get more sicker. हमारा बता रहे हैं प्रभुपाद जी ने कहा कि सबसे उत्तम है गोबर, उसके बाद है लकड़ी, उसके बाद है चूल्हा और सबसे खराब है इलेक्ट्रिक गैस। तो यदि माताएं यदि उस पर भोजन बना रही हैं तो बीमार हैं तो और बीमार हो जाएंगे। Krishna has given us everything we need to live in nature. Nature is our mother, Krishna is our father. Mother and father together take care of us naturally. We don't need all of this artificial stuff that is going on in society just to live. It's just some creation of some greedy capitalist people. तुम्हारा बता रहे हैं कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दे रखा है जो हमारे लिए जीने के लिए आवश्यक है। इस तरह प्रकृति जो है हमारी माँ है और कृष्ण जो है हमारे पिता है। तो कुछ पूंजीवादियों के कारण जो है हमने जो पूंजी का उपयोग लग रखा है उनके कारण हमें इस तरह कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। The most important thing is to be Krishna conscious. और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कृष्ण चेतना युक्त होना। And the second most important thing
is to keep good health. और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना। We say if you lose your money, you lose nothing. इस तरह कहते हैं कि आपने धन खो दिया तो कुछ भी नहीं खोया। Money comes, money goes. धन तो क्या है, आना और जाना लगा रहेगा। So if you lose it, you lose nothing. यदि पैसा गया तो कुछ नहीं गया। If you lose your health, you lose something. और यदि स्वास्थ्य खो दिया तो कुछ खो दिया। You spend money to get health. Health is more important than wealth. क्योंकि हम पैसा गवा के स्वास्थ्य कमाते हैं, कमाना चाहते हैं, तो स्वास्थ्य पैसे से अधिक महत्वपूर्ण है। And if you lose Krishna, you lose everything. और यदि कृष्ण को खो दिया तो फिर सब कुछ खो दिया। So Prabhupada would say, keep good health, serve the Lord. But how can we keep good health in a society that is killing us the way we live? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि अच्छा स्वास्थ्य बनाइए और कृष्ण की सेवा में युक्त रहिए। लेकिन हम कैसे अच्छा स्वास्थ्य बनाए ऐसे समाज में रहकर जो हमें मारने का प्रयास में। So don't get so excited about all of this Western new stuff that's coming out in the market. It's just to get your money. They're just interested in making it. तो ये पाश्चात्य सभ्यता जो प्रलोभन प्रदान कर रही है, जो बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं के प्रभाव में बताइए, बस ये एक और तरीका ही है कि आपके पैसे को लेके जाने। Happiness is relationships. वास्तव में प्रसन्नता जो है वो संबंधों से आती है। Relationships make life happy. जब संबंध हमारे होते हैं तब उससे जो है जीवन में आनंद आता है। And of course, the perfect and ultimate relationship is a relationship with Krishna. और वास्तव में जो चरम संबंध है, जो अंतिम महत्वपूर्ण संबंध है, वो तो कृष्ण से संबंध है। But the relationships with the devotees also give us satisfaction and happiness because devotees care about each other. भक्तों के साथ भी जो हमारे जो संबंध हैं वो हमें बहुत ही ज्यादा आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि भक्त एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। Non-devotees will care about you if they can get something from you. Devotees are not like that. Devotees care for each other because it is natural to care for others, and devotees become happy when they can serve others. The non-devotees will serve you if they can get some. Honey. Is the honey. So wherever there's bee honey, there is bees. Sting. तो अभक्त जो है आपके पास जब तक वो देखते हैं कि आपके से वो कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पता चलेगा आपसे कुछ मिलना नहीं है तो आपके पास नहीं आएंगे। इसलिए अभक्त जो है हमारे पास क्यों आते हैं? पैसा 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 के लिए। पैसा जो है शहद की तरह उनको मीठा लगता है, लेकिन जहाँ शहद होता है वहां मधुमक्खियां भी आ जाती हैं। So think about it. I have written one book. It's called Krishna's Way, Natural Living. I'm sorry, I don't have copies with me now, but everywhere I go, the book sells out completely. People are interested in going back to a more natural way of life because they can see, they can experience how difficult it is to live life in a very high technological, electronic lifestyle where people just working, getting money, spending money, suffering like anything. It's not a natural way to live. It's only been something that has been prevalent in the world for the last 300 years. Before that, people were living close to the land, they were worshiping God. Now they're worshiping, what is it, artificial intelligence. तो महाराज बता रहे हैं, Robots, we're worshiping robots. तो महाराज बता रहे हैं कि हमें जो है मैंने एक पुस्तक लिखी है कृष्णास वे नेचुरल लिविंग, जिसमें कि ये बताया गया है। अभी पुस्तक उपलब्ध नहीं है,
जहाँ भी जाते हैं पुस्तक पूरी तरह से सब लोग ले लेते हैं, जिसमें कि ये बताया गया है कि क्या महत्व है प्राकृतिक जीवन जीने का। और कई लोग इसे लेते हैं क्योंकि अभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि प्राकृतिक जीवन का क्या महत्व है, और इस तरह की आधुनिक तकनीकी सभ्यता में पैसा कमाते हैं फिर पैसा गवाते हैं और कष्ट पाते हैं। इस तरह से जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है। 300 साल पहले तक जीवन जो है बहुत ही सरल था, भगवान की लोग पूजा करते थे और प्रकृति के पास में थे। आज मोबाइल की पूजा करते हैं। So think about it. Maybe you have so many wonderful devotees who are so qualified. You can set up a nice community where you can keep cows, grow agriculture, and work the land and learn how to live in a very simplified. I'm sure many of you have grown up in that type of atmosphere. But now we're stuck in this Western technological way of living, and it's destroying people, and it will get only worse. Really, it's only going to get worse. तो इसके बारे में आप सोचिए, आप बहुत ही काफी योग्य हैं और इस तरह से प्रकृति के पास रह सकते हैं, खाना रख सकते हैं, जमीन में खेती कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप में से कई लोग ऐसी संस्कृति में बड़े भी हुए होंगे, क्योंकि लेकिन अभी सभ्यता का प्रभाव आ गया है, इस तरह विचार कर सकते हैं। And when you live simply, you have more time to chanting Hare Krishna. और यदि हम इस तरह सादा जीवन बिताएंगे, अधिक से अधिक हम समय हर काम के लिए पाएंगे। Okay, we are about to get ready to worship the Supreme Lord in His beautiful form of Sri Damodar. So soon we will begin the chanting of Damodar Astakam. So everyone come up and take a lamp, a little ghee lamp, and with bhakti, with love, offer your lamp to Damodar. तो अभी हम भगवान दामोदर को पूजने की अवस्था में हैं। अभी सभी से निवेदन है, सभी लाइन से आके दीप देंगे और भगवान को अर्पित करेंगे और साथ में आरती होगी। Thank you. Hare Krishna. Guru Prabhupada ki. We just want to take a minute to offer our heartfelt gratitude to His Holiness Chandramouli Swami Guru Maharaj for coming to Indore and giving us his association last 3 days. I think we all got a glimpse of what it must be like to be in Lord Chaitanya's Sankirtan party, to constantly relish the holy name. And Chaitanya Charitamrita says that a Vaishnava is one just by seeing them, we are inspired to chant the holy name. And we have all experienced that with Guru Maharaj, that whenever he comes here, the holy name is constantly in our minds. So we really pray to Krishna that Maharaj comes again and again to Indore and gives us an opportunity to serve him. And here to Maharaj took a lot of physical austerity to come here. Physically, a lot of inconveniences, but Maharaj has been extremely tolerant and patient, very, very merciful. So, thank you so much, Guru Maharaj. We have no words to offer. Thank you. हरे कृष्ण। सभी डिवोटीज से निवेदन है कि एक कतार में आए, प्रभु एक तरफ से, माता जी दूसरी तरफ से, और हम दामोदर अष्टकम स्टार्ट कर दें। प्रभु कतार में आइए प्लीज, माता जी उस तरफ से, ठीक है? हाँ प्लीज लाइन में आइए, सब लाइन में आ जाए प्लीज। हरे कृष्ण। जहाँ पे जो खड़े हैं प्लीज लाइन निकल जाए पीछे की तरफ। हरे कृष्ण। माता जी से निवेदन है कि यहाँ से लाइन में आ जाए। स्टार्ट प्लीज।
तो गुरु महाराज श्रद्धावान के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। भक्त शुभम हरिओ। नेक्स्ट इज भावेश मनवानी प्रभु हरिओ। गुरु महाराज से श्रद्धावान सर्टिफिकेट पाते हुए। नेक्स्ट इज शिवेंद्र प्रभु हरि हरि श्रद्धावान सर्टिफिकेट। नेक्स्ट इज हिमांशु हरे कृष्णा। Thank you, Guru Maharaj. The last one is Ayush. Hari Hari. Thank you, Maharaj, for your blessings. जय श्री श्रीमान चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की। Krishna Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna हरे कृष्णा। जिन भक्तों को चेतन चैतन्य श्रीमद् भागवत प्राप्त करना है उनके लिए बहुत ही उत्तम अवसर है। महाराज से कर कमलों से प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारे बीच भागवत सेट लिया है हमारे आशीष महाजन प्रभु ने। उनके लिए एक बार हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama. Everyone, Rama Rama Hare Hare. कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे